जय भारत। वेलकम टू डेफ टॉक्स क्लिप्स बाय आदि अचिंत। जैसे ही आपने मेरे बड़े चैनल जो डेफ टॉक्स बाय आदि है उसको आपने जिस तरह से सपोर्ट करा, उसी तरह से ये हमारे क्लिप्स के चैनल को, जहां पर आपको छोटे छोटे अपडेट्स, छोटे छोटे शॉर्ट्स और छोटी छोटी कहानियां मिलेंगी, इसी को भी सपोर्ट जरूर कीजिएगा। लाइक का बटन जरूर दबाइए, सब्सक्राइब तो ऑब्वियसली करिए, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड हाँ जी, प्लीज अपने दोस्तों के साथ, फैमिलीज के साथ ये वीडियोस जरूर शेयर करिएगा। एंजॉय करिए ये क्लिप को। जय हिंद। लोग कई बार ना वर्ल्ड वॉर 3, कोल्ड वॉर 2.0 ये इवन वेस्टर्न ऑथर्स यूज करते हैं वेरी लूजली, और हमारे बंदे भी उसके फिर वो कथन जो होता है वो प्रचलित हो जाता है कि वर्ल्ड वॉर 3 2.0 वर्ल्ड वॉर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा एक्सप्लेनेशन देना चाहता हूँ कि यार जब हम वर्ल्ड वॉर कहते हैं मतलब क्या है उसका, और दो जो वर्ल्ड वॉर्स हुए उनका उदाहरण देता हूं कि उनको हम क्यों कहते हैं वर्ल्ड वॉर। उसके बाद फिर लेंगे कॉन्सेप्ट्स जो आते हैं कि ये यहाँ पे लड़ाइयाँ क्यों होती हैं इस वर्ल्ड आइलैंड, उधर से आगे लेके चलेंगे टॉक। तो सबसे पहले क्या होता है वर्ल्ड वॉर का, क्या मतलब होता है कि द वर्ल्ड आइलैंड, इसमें जो आउटलायर्स है ना, अमेरिकाज, दे डोंट कम इनटू प्ले एंड द वर्ल्ड आइलैंड कम्स इनटू प्ले। एंड उसमें भी जो आगे कॉन्सेप्ट्स आप देखेंगे, मच ऑफ अफ्रीका इज मिसिंग इन दैट, विच इज अ बिग सरप्राइज, बट मच ऑफ द वर्ल्ड आइलैंड गेट्स अफेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड द मेनी नेशंस एंड पुराने जमाने के कॉलोनीज गेट इन्वॉल्व इन इट। इट हैज नथिंग टू डू विद वेयर द बैटल इज गोइंग ऑन। Battle can be going on anywhere, but if much of the world island and with men, material and other things get involved in that fighting, then it's a world war. जी, ओके, इन्वॉल्वमेंट हो गया, मतलब सबका एक साथ इन्वॉल्वमेंट, घुस गए हैं। यस, हाँ जी। देन इट्स अ वर्ल्ड वॉर, जी जी। क्योंकि आप इन्वॉल्व हो रहे हो लड़ाई में, मेन हम्म। मटेरियल सब जा रहा है आपका, और ये आपके वर्ल्ड आइलैंड के इकोनॉमी को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट करता है। हम्म। आउटलायर्स के ऊपर उतना इफेक्ट पहले होता नहीं था, आजकल होगा क्योंकि ग्लोबलाइजेशन हो गया, इंटरडिपेंडेंसी आ गया। हम्म। अगर वर्ल्ड वॉर 1 देखें, मोस्ट ऑफ इट वाज फॉट इन यूरोप, देन देयर वाज वेस्ट एशिया, क्योंकि सेंट्रल पावर्स वर्सेस एलाइज। सेंट्रल पावर्स वर द जर्मन एम्पायर, द ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर, द आपके बल्गेरिया एंड द ऑटोमन एम्पायर। दीज वर द सेंट्रल पावर्स, क्योंकि वो सेंट्रलिटी था। रशिया एक साइड में था एंड वेस्टर्न यूरोप दूसरे साइड में था। दे फॉर्म्ड द मिडिल पोर्शन ऑफ सेंट्रल यूरोप स्ट्रेचिंग इनटू एशिया, बिकॉज ऑटोमन एम्पायर वाज इन्वॉल्व। सो वेस्ट एशिया में लड़ाई हुई थी। Then there were certain parts of Africa where the German colony was there, or the Austro-Hungarian colony was there, उस पे हुआ था। Similarly Pacific में German colonies were there in the southern Pacific, वहाँ पे अटैक हुआ। But bulk of the लड़ाई was, one portion was Europe where the maximum took place, the other was West Asia, जी। लॉरेंस ऑफ अरेबिया, ऑटोमन। सब सुना होगा हम्म। नाम, जी। ठीक है, अगेंस्ट द ऑटोमन्स। बट हुआ क्या था, manpower, men and material came from virtually the entire globe. All colonies were involved. And जी। after the sinking of Lusitania in 1917, allegedly by the Germans, a lot of people say that it was the British Navy which sank it along on orders of Churchill. But what has come out more is that it was the Germans which sank the passenger ship Lusitania in 1917. The Americans joined it. So Americans also gave their men and material. Okay, so it impacted the world island. उनकी पूरे economy सबको। destroy हो गई. हम्म। And like I have said earlier also, it led to the Kindleberger trap. क्योंकि उन्होंने किया कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, so they created a League of Nations. हालांकि यूएस
was involved in all the discussions and formulating the articles and the charter for the League of Nations, but they were not signatory to it. And they were the only economy which could sustain anybody. बाकी सबकी इकोनॉमी ध्वस्त हो गई थी लड़ाई के बाद. कितने जी मिलियंस एंड मिलियंस मरे थे. हमारे यहाँ पे भी फैमिन वगैरह हो चुका था बिकॉज ऑल द राशंस went यूरोप जा off रहे to Europe for fighting. Okay. So, and it became a trap for the Americans themselves because there was no market. So you went into a Great Depression. Similarly, when you look at World War II, most of it was fought either in the Europe or in the Asia Pacific domain. Some battles were fought in around the Mediterranean and in West Asia. नॉर्थ अफ्रीका वेस्ट एशिया North Africa, West Asia. Some battles were fought. That's about all. But again, colonies were still there. Men and material came from everywhere. So most areas of your world island again got impacted. जी That's why it is termed as a world war. And what happened led to the rise of USA. And this time the Kindleberger draft didn't take place because the USA formulated all the UN was placed, otherwise the League of Nations were placed in Switzerland. उसको जगह को बोलते हैं Palais des Nations, Palace of Nations, because it was the League of Nations का headquarters. But now the UN and everything came into the US, the only country after the Second World War also which could look after the global economy. जी And they created all the financial institutions. They provided funds for the development of Western Europe and recreating and rebuilding their Asian markets also, like Japan, South Korea, and all these were given. And of course, they had also given subsequently to the Chinese. जी Okay. Now, because of this and because of the US presence all over the world island, they came to dominate this world island. And when we talk of Cold War 1.0, that is basically the US and their allies versus Soviet Union and their allies, and the two were not interlinked in any which way. Globalization तो था ही नहीं. Now, when we are talking about this, let us look at the maps. जाने से पहले मैं 1 मिनट के लिए आपको रोक लूं तो प्लीज ये चैनल को लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हाँ हमारे जो मेन चैनल को जरूर जरूर अपनी फॉलोशिप दीजिए ताकि हम आपको अच्छे अच्छे पॉडकास्ट, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स एंड जियोपॉलिटिकल अपडेट से आपके सामने प्रेजेंट करते रहें इसी तरह से. थैंक यू सो मच. जय हिंद, जय भारत.